So for today's topic we are going to do addition. Alright. So let us understand it with the help of example. But definition. Addition is joining for today's topic, we are going to learn about addition. So let us understand what addition is. Addition is joining two or more numbers to find the total or sum. So whenever we add two or more than two numbers to get the total of it. Alright, for example, 2 plus 2 equals to 4. Right? So how did we got this 4? We added two numbers to get the sum or the product. Right? So addition is joining two or more numbers to find the total or sum. So this is what addition is. We are going to do some exercises to understand now. This is the question we are going to solve now. So in our previous classes, in the junior classes, we studied about simple addition. So look here closely. We used to do addition like 2, 1. 2 plus 1 is 3. So this was the sum or total. By adding two numbers, we got 3. This is the format we studied addition in our junior classes, right? So now what we are going to study is, we are going to study the addition by carry over method. By carry over method. Alright. So for that, as in my last class also, I made you understand the term place value. And I made you understand how to place numbers in terms of ones and tens. Right? So let us recapitulate it. Like for example, if we have 12. How did we wrote the place value of 12? It was 1, 10 and 2 ones. We studied to divide the place value like this. Right? So this is how we studied the place value of 2 digits. So today also we will do addition with place value. Right? So how are we going to do the addition over here? Look closely. 7 plus 5. How much it becomes? 7, 8, 9, 10, 11 and 12. 7 plus 5 is 12. Right? So as I told you that on ones place only one digit number can be placed, right? So on column of ones, we are only allowed, or we are only to write on the single digit number. But here by adding 7 and 5 we got 12. So how do we do the addition? We will first divide its place value, right? So it is tens and ones. On 12 it is 1, 10 and 2 ones. Like I wrote it over here. By adding 7 and 5 we got 12.
So first we will divide it on terms of two columns, ones and tens. So 12 is 1, 10 and 2 ones, right? So on the column of 1, what we are going to write? 2. And we will carry over the 1 over here. Why this addition is called carry over addition? Because the two numbers would not be placed on the column of ones. Why? Because only one or single digit number are to be placed on one's place. So we did carry over. The one that was remained, the tens place, it will go up on the tens place. So 1 is carried over here. So this is why this addition is also termed as carry over addition. Alright? So 7 plus 5 was 12. We divided 12 in ones and tens place. We wrote 2 in place of ones and 1 in place of tens. Now we are to add all of these. 6 plus 1 is 7. 7 plus 2 is 9. Right? So this 9 and 2, this is the sum or product. This is how we do our addition in carry over method. Okay, sum or total. This is the method that we are to do the carry over addition. Let us try to understand it with the help of another example. Ones and tens. First we will write the place value and another question will be we have to add this number. So how will we do this? First we will add the numbers on the ones place. So 7 plus 3, 7, 8, 9, 10. 7 plus 3 is 1, 0, 10. So as I told you that the 2-digit number cannot be placed over here. Right? So how will we do? The place value of this, we will divide it. Tens and ones. As we know, 10 is 1, 10 and 0, ones. Because 10 is a group of 1. So इसमें ones नहीं होगा. So 10 is only 1, 10. Right? So how will we write this? We will write it as this 0 will come to this 0 will come to its one space में 0 है, so 0 will come over here. And on the place of tens we have 1, so 1 will go and live up here. Plus 1. We have to add, write plus 1 over here so that we won't forget to add this also. Like this. Plus 1. Alright, so now we will add 1, 4 and 2 and we will get the answer over here. So 4 plus 1 is 1 plus 4 is 5, 5 plus 2 is 7. So 47 plus 23 is 70, 70. Now 70 over here is the sum. 70 over here is what? Is the sum or say total. Right? How did we got this? First we made the numbers in place value. We divided it in place of ones and tens and then we did the addition. First we added 7 and 3, we got 10. But this number 10 could not be placed on ones place. Why? Because on ones place only single digit number are to be placed. So the 10 it went over on the tens place and we did all the calculations. We added and we got this. So this is how carry over addition is done. Alright. So let us try with another example. First we will write
and ones. Alright? And now so let us do this addition together. How will we do this? First, what will we have to do? We will have to do the addition of this. So 8 plus 4 is 8, 9, 10, 11, 12. 8 plus 4 is 1, 2, 12. So we cannot write 12 over here like 1, 12. We cannot write. By adding 8 and 4 we got 12. But 12 altogether here we cannot write because on the ones place only single digit number are to be kept. Right? So what we will do is we will first divide this 12 in terms of base value. We will divide this. Right? So it is tens and ones. As we know 12 is 1, 10 and 2 ones. Right? 12 is 1, 10 and 2 ones. So now what will we do? What is on the ones place? We have 2. 2 will come and live over here. And this one, it will go up to tens place. Plus 1. Right? So 8 plus 4 was 12. We divided it into 2 columns, tens and ones. So this 2 is ones, so it will come and live over ones place, and this 10 will go on tens place. So we will add these numbers now. We are not supposed to forget the one that comes from here. So we wrote addition sign so that it will make us understand and we don't forget it. So 2 plus 1 3, 3 plus 1 is 4. Right? So now this is the sum or total. So 42 is sum or say total. It is sum or total. By adding 28 and 14 we got 42. 28 plus 14 is 42. Alright? So, let me make it clear to you with one more example. So, first listen carefully, okay? First what we have to do? First we have to do the questions carefully while doing the addition. As we already know, ones is in our left hand side and tens is placed in right hand side. So, another question is, five, 6, 1 and 4. Right? We will have to add this number and get the sum or product. So, let us add this together. I am using different colors pen so that it will be more clear for you all to understand. Okay? So now let us add. What will we have to do? First we will have to add the numbers on the ones place, as we all know. So 6 plus 4 is 10. Right? 1, 0, 10. It is 2-digit number, so we cannot write it here. Why? Because on ones place, as we all know now, that only single digit number are to be placed on ones place. So how are we going to place the number 10 here? What will we do? We will first divide it in terms of place value. So, tens and ones. 10 is 1, tens and 0, ones. So, on ones column, what did we got? We got 0. So, 0 will come over here. We will write 0 here. And on tens place, how much did we got? We got 1. So we will write plus 1.
1. Alright, plus 1. So now we will add all these numbers together. 1 plus 5, 6. 6 plus 1, 7. Which is 7, 0. Right? So this 70 is sum or total. Alright? So this is how we do carry over addition. Why this addition is called carry over addition? Because on ones place only the single digit number are to be placed, and if the numbers are like this in double digit form, the second number it is carried over on the tens place. So that is why this addition is also called carry over addition. Alright, so how did we solve this? Ones and tens place we had numbers like 5, 6, 56 plus 1, 4, 14. So as we all know, first the numbers on the ones place are to be calculated. So by adding 6 and 4 we got 10, but we could not write 10 over here. So we did the place value of 10, and by doing the place value, what did we got? We got 0 in ones place and 1 in tens place, like we added 1 over here. So 6 plus 4 was 10, and on ones place we got 0, and this 1 it went over and it got carried over on the tens place. So we added 5 plus 1 plus 1, so we got 7. Right? So this is how addition is done by carry over method. So let us see what we did till now. First we understood what addition is with the help of this definition. So what is the proper definition of addition? This is the sign of addition. This is how addition is depicted, and the definition is addition is joining two or more numbers to find the total or sum. When we add two or more numbers to find total or sum, we get this term is defined as addition, like 2 plus 2. I gave you the example over here. 2 plus 2 is 4. By adding these two numbers, we got sum or total. So 2 plus 2 was 4. So this is how addition is done. Secondly, we here studied or learned how we do addition by carry over method. So how did we do that? Ones and tens place we divided the numbers. So we added the number in the ones place. जो नंबर ones place में है पहले हम उसी को ऐड करेंगे. तो हमने इसमें भी वही किया. We added 7 plus 5. Right? 7 plus 5 को ऐड करके हमें टोटल मिला था 12. 12 तो यहाँ पर हम नहीं लिख सकते. क्यों? क्योंकि जैसे कि हम सब जानते हैं अभी तक तो ones place में only सिंगल डिजिट नंबर को रखा जा सकता है. तो so this 12, ये 12 को हमने क्या किया? प्लेस वैल्यू में डिवाइड कर दिया. कैसे? We divided 12 in terms of place value. How? Like, as we know, 12 is 1, 10 and 2 1. So 12 को place value में डिवाइड करके ones के place में 2 और tens के place में 1 लिख दिया. And this 2, ये जो ones के place में 2 है, इसको हमने यहाँ पर लिख दिया. And the ones over here we got carried over. So this is how we did the addition. Alright. This is how the addition is done. So let us try to understand it with one more example. Okay. Tens and ones. 4, 3 and 2. So how will we do this addition? As I told you, first हम क्या ऐड करेंगे? जो नंबर ones place में हम फर्स्ट उसको ऐड करेंगे. 7 plus 4 कितना होता है? It is 1, 1,
11। तो 11 हम यहाँ पर डायरेक्टली 1 ऐसे लिख नहीं सकते, क्यों? क्योंकि 1 स्पेस में ओनली सिंगल डिजिट नंबर को ही रखा जा सकता है। सो व्हाट वी विल डू इज वी विल डिवाइड दिस नंबर इन tens and ones, right? So as we know 11 is 1 10 and 1 1, right? So this जोड़कर कितना मिला था हमको 11। So ones के प्लेस पे क्या है 1, तो यहाँ पर लिख देंगे and on tens place we have 1। So ये 1 जाकर यहाँ पर क्या होगा कैरी ओवर होकर add, right? So 3 plus 1 4, 4 plus 2 6, right? So this is how addition is done by carry over method. So this is all for today. We will meet tomorrow with another topic. Till then, I hope you guys have understood. This is how addition is done with carry over method. Okay? So this is the end of your math class. Now be ready for your SST class. Good afternoon everyone. I hope you all are doing great and Happy New Year to all. Okay, so last time we have done, we have finished tick the correct answer and fill in the blanks, right, from chapter 13. Okay, so today we will be doing true and false and question answer. Okay, so take out your copy everyone. I hope you all have copied down the tick the correct answer and fill in the blanks in the copy. Kindly note it down. Okay, now we will do true and false. Okay. Hi Jess. Everyone note it down in your copy. ये सब आपको कॉपी में लिखना है, ठीक है? I will check it when our offline classes will again resume. Okay? Look at question number 1. Computers need air to breathe. Computers need air to breathe. Is it true or false? Does computer need air to breathe? Huh? Computer को चाहिए होता है क्या air? It's false, right? Computer needs what? Computer needs electricity, right? Slow moving and soft wind is called breeze. Number 2. Slow moving and soft wind is called breeze. Is it true or false? Comment down. Is it true or false?
Number 3, people use hand pumps to obtain underground water. Is it true or false? जो भी पानी ग्राउंड के अंदर होते हैं उसको निकालने के लिए हम पीपल क्या यूज करते हैं? हैंड पंप्स. ट्रू है कि फॉल्स है ये? इट इज ट्रू, राइट? वी ऑल ऑलरेडी लर्न दैट जो भी ग्राउंड वाटर होता है, ग्राउंड के अंदर पानी होता है, वो किससे निकालते हैं हम? Either we use hand pumps or tube wells, right? So this is also true. Number 4, we cannot see air but can feel heat. We cannot see air but can feel it. Is it true or false? हम एयर हवा को नहीं देख सकते बट हम क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, राइट? इज इट ट्रू और फॉल्स? दिस इज ट्रू, राइट? हमें पता है हम हवा को नहीं देख सकते बट क्या कर सकते हैं? सिर्फ उसको फील कर सकते हैं, राइट? नहीं देख सकते इसलिए हम उसको टच नहीं कर सकते, राइट? स्मेल नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते. We can only feel it. Look at number 5. We should make the air dirty. We should make the air dirty. Is it true or false? हमें हवा को बहुत क्या करना पड़ेगा? गंदा करना है. Is it true or false? We should make the air dirty. Is it true or false? Obviously it's false, right? हमें हवा को क्या करना चाहिए? साफ रखना चाहिए, right? We should not make the air dirty. Instead, we have to make the air clean, right? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? We have to plant more and more trees as much as we can, right? So this was the answers for your true and false. Everyone, copy down, note it down in your copy. Not only in your book, you also have to copy down in your copy as well. Okay? Either you can take a screenshot or you can just pause the video. Did not. Now next is answer the following question. Right? Number 3. Question and answer. Answer the following question. Are you all noting down this in the copy? तुम सब लोग कॉपी पे लिख रहे हो ना ये सब जो भी हमने किया है? Fill the right answer, fill in the blanks, true and false. आपको नोट डाउन कॉपी पे लिखना है ये भी. सिर्फ बुक पे आंसर नहीं लिखना है, कॉपी पे भी लिखना है. Note number 1 question. Write any 2 uses of air. Write any 2 uses of air. We have learned, right, earlier जब हम air के बारे में पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था uses of air, right? क्या क्या चीज के लिए यूज होते हैं? पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था हमने, right? So क्या क्या था? We need air to breathe
first of all, right? That's the most important thing. हम एयर को किस लिए यूज करते हैं? We use air to breathe, right? First is that. Second is we have done one experiment, and if you all remember or not, हमने क्या किया था? कैंडल से रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट भी किया था, right? So we need air to burn, right? These are the two uses of air. There are other uses as well, but in question we only have to write two uses of air. Okay, so we will write air helps us to breathe and burn fire. Okay, air helps us to breathe and burn fire. Is it clear, everyone? Kindly note it down in a copy. जो भी मैं क्वेश्चन आंसर आप लोगों को लिखवा रही हूँ, आप कॉपी पे नोट डाउन कीजिए. If there is any problem, if there is any confusion, then kindly let me know. Okay. Now number 2, how does air become dirty? How does air becomes dirty? हवा कैसे गंदा होते हैं, मैला होते हैं, गंदा होते हैं? How does air becomes dirty? हमने पढ़ा था, right? कि हवा, what are the things that makes air dirty, right? क्या क्या था? Smoke था. First was smoke, right? Then dust particles, right? The smoke that comes out from car, factories, ये सब चीज क्या है? ये सब चीज है जो एयर को क्या बनाते हैं? डर्टी बनाते हैं, राइट? So air becomes dirty. Air becomes dirty due to smoke and dust. Okay, मैं आपको बहुत सिंपल सा आंसर्स बना के दे रही हूँ, बिकॉज आप लोगों को पढ़ने में क्या हो, ये आसान हो. ठीक है, सो नोट इट डाउन इन योर कॉपी. Let's move to number 3. Name some sources of water. Number 3 question is name some sources of water. Water का source क्या क्या है? We already learned that, right? There are various sources of water, right? And there are rivers, lakes, ponds, seas, oceans. These all are the sources of water, right? But amongst this all, what is the main source of water? It is rainfall, right? What is the main source of water? It's rainfall, right? So, rain, right? Rain, rivers, lakes, ponds. Starting with rain, river, lakes and ponds. Okay, these are the sources of water, and there are other sources as well, but we only write these 4 sources. Okay.
Yes. Rainfall is the main. We have already learned, right? Rainfall. Barish, main source of water. Copy pe, are you noting down in the copy? Pritam, Jess, who all are there? Angel. Write it down in the copy. Note it down. Jess, लिखो कॉपी पे, टेक्स्ट मत करो यहाँ पे. Angel, okay. Okay, now I am moving to the next question. Okay. If you have not completed yet, you can do it later. Okay. When this class will be over, then again you can go back to my class and then you can do this question and answer. Next is number 4. How is water useful to us? How is water useful to us? How is water useful to us? We already learned, right, uses of water. We use water for various purposes, right? हम पानी को किस लिए चलाते हैं? बहुत सारी चीज़ों के लिए चलाते हैं, right? For example, drinking, cooking, cleaning, bathing, right? ये सब चीज़ों के लिए हम पानी को use करते हैं. ठीक है? So we will write that we use water for especially for drinking, right? First is drinking, and then cooking, cleaning, and bathing. Okay. This is how water is useful to us, right? Now, number 5. Why should we save water? This is the last question. Why should we save water? हमें पानी को क्यों सेव करना चाहिए? Why we should save water? We should save water because it is precious, right? Because it is very important, right? हमें जीने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए. That's why we should save water, right? We should save water because it is important for life. We should save water because it is important for our life. Note it down in your copy, everyone. How is water useful to us? We use water for drinking, D-R-I-N-K-I-N-G, drinking, C-O-O-K-I-N-G, cooking, C-L-E-A-N-I-N-G, cleaning, and B-A-T-H-I-N-G, bathing. Why should we save water?
we should save water because it is important for our life. ठीक है, IMPORTANT, important. Don't make mistake. Okay, so this is the last question. Tomorrow we will be discussing the remaining part. Okay. Everyone, just look at the page number 111. There is this one activity corner, right? You will do it at your home right now. Color the items and that contains air. यहाँ पे 3 चीज आपको दिए गए हैं, right? As you can see in the page 111. So amongst these, you have to color the items that contain air. ठीक है? इनमें से आपको उस चीज को कलर करना है जिसके अंदर एयर भरा होता है. ठीक है? This will be your homework. And the next we will discuss it tomorrow. Okay, with this we have come to the end of the class. Get ready for your computer class. Okay. Thank you. Hello student, this is the computer class for class 1 and for today we are going to learn about keyboard. So what we are going to learn today, we will be learning about keyboard. Let us try to understand this with the help of a definition. So, what is a keyboard? A keyboard is an input device used to type letters, numbers, symbols into a computer. So this is the proper definition of keyboard. So let us try to understand what a keyboard is. A keyboard is an input device used to type letters, numbers and symbols into a computer. So what is keyboard? Keyboard क्या है? Keyboard एक input device है computer का that is used to type letters, numbers and symbols into a computer. So keyboard क्या करता है? Keyboard किसकी मदद करता है? It is used to type letters. If we are to search anything or write anything on computer, what is used for that? Keyboard. Keyboard लिखने में, कोई भी अल्फाबेट लिखने में या कोई भी नंबर या सिंबल किसी भी चीज को टाइप करके कंप्यूटर में सर्च करना या कुछ पूछना, कुछ जानना, what is used for that? Keyboard is used for that. So this is the proper definition of keyboard. So write this definition in your copy. What is keyboard? A keyboard is an input device used to type letters, numbers and symbols into a computer. Keyboard is an input device.
what does keyboard helps us? It helps us to type letters, numbers and symbols into the computer. Alright, so this is what a keyboard is. Now we will try to understand the types of key. Understand this now. So there are different keys in keyboard. So now we will understand the types of keys. Alright. First we have alphabet key. First we have alphabet key. First number is alphabet key. So alphabet key as its name itself suggests, alphabet key में क्या होता है? Alphabet A to Z. These alphabets are present in alphabet key. Jai Shankar, please help me. What am I supposed to help you with? तो ध्यान से सुनो, आज हम पढ़े कीबोर्ड, राइट? What are we learning? We are learning about keyboard. The keyboard का definition है. What is a keyboard? A keyboard is an input device used to type letters, numbers, and symbols in a computer. This is the proper definition of keyboard. And now we are going to learn types of keys. Keyboard में keys होते हैं different types के. तो आज हम सीखेंगे कीबोर्ड की कीज क्या क्या है and what is it used for. All right. First is number 1 में क्या है? It is alphabet key. So what is alphabet key? There are 26 जैसे हम सबको मालूम है इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश में 26 लेटर, इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं. A to Z तक 26 लेटर्स होते हैं. तो अल्फाबेट में A to Z तक सब प्रेजेंट होता है. जैसे हम सबको मान लीजिए if you are supposed to type friend, आपको लिखना है friend. If you are supposed to type friend in computer, तो आप क्या करेंगे? वो अल्फाबेट की में सब प्रेजेंट A to Z तक सब लेटर्स प्रेजेंट होता है. आप पहले F R I E N जैसे टाइप करके एक वर्ड फ्रेंड आप सब टाइप कर सकते हैं. That is possible with the help of keyboard and the key alphabet key that consists of 26 letters. It will help us to type or write any letters or words. Right. So types of key में first we are learning about alphabet key. So there are 26 letter key from A to Z. Alphabet key में क्या होता है? 26 letters from A to Z. Alright. So and this alphabet key also प्रेस या टाइप करके हम सब कोई भी वर्ड या सेंटेंस बना सकते हैं. A to Z प्रेजेंट होता है. आप सबको
एक सेंटेंस या वर्ड जैसे I am hungry. You are supposed to write this. I am hungry. How will we write this on computer? On keyboard we will type letters. First we will find I space am hungry. So we are supposed to write this with the help of alphabet key. Alphabet key में जो 26 letters present है, with the help of these only we are supposed to write any word or sentence. Alright? So first was types of key में first हमें अभी पढ़ा है alphabet key. So the next one is number key. Number 2 is number key. Number key. Alright? Number key क्या है? समझते हैं आप? Now these number keys are, you can find number keys in two places. Number key दो places में मिलता है. Where above alphabet key, it is found above. Above alphabet key and on the right side of keyboard. So number की कहाँ पर प्लेस होता है? It is above alphabet key. अभी हमने जो alphabet key पढ़ा है ना, इसके ऊपर होता है नंबर की प्रेजेंट. Above alphabet key and on right hand side of the keyboard. कीबोर्ड का जो right hand side होता है, ऐसे right hand side में नंबर की प्लेस होता है. जैसे 1 2 3 4 5 7 ऐसे नंबर की is placed over there. Alright. So what is this number key used for? नंबर की किस लिए यूज होता है? It is used to type numbers from 0 to 9. Number key, the name itself suggests it is used to type numbers. जैसे अल्फाबेट की में हम सब अल्फाबेट प्रेस करके एक वर्ड या सेंटेंस बनाते थे, ऐसे नंबर की what is this useful for? It is useful to type numbers. Just अब कंप्यूटर में आप सबको जैसे आज का डेट डालना है. For example, today is 2nd of January, right? So these two, how will you type these two? ये नंबर की में प्रेजेंट होता है, इसीलिए आप सब ऐसे टाइप भी कर सकते हो. और नाउ द ईयर इज 2026, राइट? सो हाउ विल यू राइट 2026? इट इज पॉसिबल विद द प्रेजेंस ऑफ नंबर की इन कीबोर्ड. सो इसमें 0 से 9 तक नंबर्स प्रेजेंट होता है. जैसे दिस ईयर इज 2026. सो हाउ विल वी टाइप दिस? On the number plate we will first press on 2, 0, 2 and 6. This is how number key is helpful for us to type any numbers on computer. Alright. So the next one is space bar. The next key is space bar. So what is space bar? Space bar
longest key on space bar is the longest key on so what is space bar? Now we will understand the use of space bar. Alright, so keys हम कीबोर्ड का कीज के बारे में पढ़ रहे हैं ना. फर्स्ट वी स्टडीड अबाउट अल्फाबेट की. अल्फाबेट की क्या था? उसमें A to Z तक अल्फाबेट प्रेजेंट होता था and that was used for us to type any word or sentence in computer. Then we studied about number key. So on number key, the numbers from 0 to 9 was present, with the help of which we could type any number on computer. Now is space bar. Now we are learning about space bar, right? So space bar is the longest key on keyboard. If you have computer around you, look over there. कंप्यूटर का जो कीबोर्ड में सबसे लंबा वाला बटन ही स्पेस बार होता है. It is somehow like this. It is somehow like this. If you have computer around you, you can see it. So, what is space bar used for? It is space bar. What is the use of space bar? It is used to add space between words. Add space between words. So, space bar का काम क्या है? It is used to add space between words. जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ना, it is used. मैंने बीच में गैप रखा है. Why is this gap present? It is present because if I write like this, it is used to. मैंने यहाँ पर जो लिखा है यहाँ भी वही है, बट यस इसमें छोटा छोटा गैप होने की वजह से आपको अलग अलग से समझ सकते हो ना. समझ आता है, इसे गैप होने से वर्ड क्लियरली समझ आता है. सो स्पेस बार का काम क्या है? जैसे नाम में ही स्पेस है, तो स्पेस बार का काम क्या है? एक जो भी एक सेंटेंस में बीच में गैप. अब कैसे टाइप करोगे? यहाँ पर तो मैं एक थोड़ा जगह छोड़कर लिख सकती हूँ. कंप्यूटर में आप ऐसे कर सकते हो नहीं, तो कैसे गैप रखोगे? ये स्पेस बार को when you press this space bar, तो गैप थोड़ा सा हो जाता है. Alright. So today we studied about keyboard and we studied about the types of key. क्या क्या पढ़ा आज हमने? Alphabet key, where alphabets from A to Z were present, with the help of which we could type any word or sentence on computer. And second, we studied about number key. On number key, there are numbers from 0 to 9 present, with the help of which we could type any numbers on computer. And now, on the third place, we studied space bar. We also know that space bar is the longest key on computer. And what is it used for? It is used to add space in between words. Alright, so I will end the class here. We will continue it tomorrow. Alright? Now get ready for your English class. Good afternoon everyone. So this is your English class. All of you be ready to study English as well as with your copy, note copy also. Okay.
give me a quick reply who were at present in today's online class. Okay. Okay. Okay, so today we are doing corrections which I gave you the homework, okay? That is from page number 68. Okay, 68. That is from using of has and have ना has and have हमने पढ़ा है ना has कहाँ पे यूज किया जाता है let's do a quick revision okay do quick revisions. He, she, it, and he, she, it, and singular nouns. Singular nouns. Okay. He, she, it, and singular nouns. इसमें हम क्या यूज करेंगे used as okay so same as I we no I we they okay and plural nouns all of plural nouns okay plural nouns we use what have right इसको सबको याद हो गया इनके बोल सबको याद हो गया ना good afternoon Jess good afternoon okay so has का भी used होगा when there is he she it and singular nouns okay singular subject में हम singular क्या लगाएंगे singular subject में हम has लगाएंगे understand and remaining I we they plural nouns इसमें हम have लगाएंगे I the questioning thing is I the ये एक सेक्शन में I singular होते होते भी हम I के साथ have used करते हैं okay so इसके बारे में हमने लास्ट टाइम एकदम अच्छी तरह से डीपली पढ़ा था क्यों लग रहे हैं कैसे लग रहे हैं कहाँ लग रहे हैं किसकी वजह से
Okay. Give me a quick reply. Okay. Fill in the blanks. Keep using has or have. Okay. Question number 1. I dash of pet dog. मेरे पास एक pet dog है. Okay. So यहाँ पे has होगा कि have होगा. Has का प्रयोग होगा कि have होगा. Give me the answer. Have. Okay. It is the exceptional I singular होते होते भी हम क्या किसका प्रयोग करेंगे? हाँ, have singular verb का प्रयोग करेंगे जिसका exceptional. Okay. Next, Mohan. Okay. Mohan dash और little sister. मोहन के पास little एकदम छोटा सा बहन sister है. Okay. So मोहन एक नाम है, noun है. But यहाँ पे कौन सा noun है? अकेला है, singular है. Okay. Singular के subject के साथ हम क्या use करेंगे? Singular verb. Understand? Next, she. Okay. She also a singular subject. She dash a big bottle. उसके पास एक बड़ा सा bottle है. She also a singular subject. तो singular के साथ साथ हम क्या लगाएंगे? Singular verb. That is has. Okay. Riyaz. Riyaz also a singular अकेला है. तो हम Riyaz dash 6 bananas. Riyaz के पास 6 bananas है. तो हम क्या लगाएंगे? Has. भले ही यहाँ पे उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो प्लूरल हो. Okay. ऑब्जेक्ट प्लूरल हो, बट हम उसको सब्जेक्ट में देखेंगे. सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल. Okay. Next, we. Okay. We यानी कि हम. अब हम में तो सिर्फ अकेला नहीं होगा ना, में तो बहुत सारे हो सकते हैं. ओके. सो ये क्या हुआ? ये दिस वन इज प्लूरल. ओके. प्लूरल फॉर्म में हम क्या लगाएंगे? हैव. ओके. हैव प्लूरल वर्ब. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, रीमा. ओके. रीमा. रीमा डैश अ न्यू बाइसाइकिल. रीमा के पास नया बाइसाइकिल है. इट इज रेड इन कलर और वो रेड कलर का है. रीमा, जब रीमा नाम आया तो मुझे रीमा मिस हमारे आपके टीचर है ना, हमारे कलीग्स का याद आया है. आई होप शी इज फाइन, शी इज इन हॉलीडे. ओके. वो अपने घर गई है, बट आई होप शी विल बी फाइन एंड जल्दी से वो क्लास स्कूल आके ज्वाइन कर ले. ओके. सो लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 6. रीमा डैश मींस न्यू बाइसाइकिल. रीमा के पास नया बाइसाइकिल है. ओके. रीमा इज सिंगुलर. रीमा अकेली है, अकेला नाउन है. तो हम क्या लगाएंगे अकेला नाउन के साथ? हैज. ओके. एंड आई में सबसे पहले क्या बोला? एक्सेप्शन. हमारे ग्रामर में, लैंग्वेज में एक्सेप्शनल है कि आई के साथ क्या यूज करना है. भले ही आई अकेला हो, सिंगुलर हो, उसके साथ प्लूरल यूज किया जाता है. ये क्या बोलते हैं इसको? स्पेशल. ओके. स्पेशल बोलते हैं. ठीक है. स्पेशल है. सो यहाँ पे आई के साथ क्या यूज होगा? अंडरस्टैंड? टू सेंटेंस. मेरे पास टू सेंटेंस है इन माय टिफिन बॉक्स. लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज पेलिकैन. क्या पेलिकैन लिखते हैं? ओके. पेलिकैन. जब भी कोई नाउन को प्लूरल एक से ज्यादा बनाना है, नॉर्मली हम एस लगा के ना, ईएस लगा के, आईएस लगा के क्या करते हैं? उसको एक से ज्यादा बनाते हैं ना. तो यहाँ पे देखिए तो पेलिकैन. ओके. पेलिकैन. पेलिकैन. जब यहाँ पे सिर्फ पेलिकन था, जब यहाँ पे सिर्फ पेलिकन है, अकेला सिंगुलर हो गया, तो नॉर्मली हम क्या लगाएंगे? हैज. ओके. राइट. बट यहाँ पे एस दिया है. इट मींस
सकते हो, ओके। एंड टुमारो क्या करूँगी, फिर से आके मैं यहाँ पे एक बार एक्सप्लेन कर दूँगी, अंडरस्टैंड। लेट्स go move to the next one. Arrange this word in ABCD order, okay? ABCD order. The words are given: pelican, okay? Pelican, white, sad, black, neck, 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 coat, long, okay, next one is friends, okay. So these are the words given in your book, and we have to arrange the words in ABCD letter, okay. These words in ABCD letter, okay. Okay. So ये ABCD order क्या होता है? ठीक है, क्या होता है? What is this? ये क्या है? What is this? मैं इसको क्या बना रही हूँ? Book, ना? Yes, you have to write in your copy also, okay? This is book. अब इस book का मैं नाम दे रही हूँ. इस book का मैं नाम दे रही हूँ dictionary. Understand? Dictionary. Okay. Dictionary. इस book का मैं क्या नाम दे रही हूँ? Dictionary. सुने हैं आप लोगों ने dictionary? हाँ? Dictionary नाम सुने हैं? नहीं सुना है, सुन लो, ओके। सो डिक्शनरी एक बुक होता है, ओके, इज अ बुक जहाँ पे पूरा जितना भी हमारे वर्ड्स है, ओके, जितना भी हमारे वर्ड्स है, ओके, हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में जितना भी वर्ड्स है उसका मीनिंग, उसका मतलब हिंदी में भी होते हैं एज वेल एज इंग्लिश में भी होते हैं, अंडरस्टैंड, उसका मीनिंग्स होते हैं, अंडरस्टैंड। और इस डिक्शनरी में कैसे और कितना सा अल्फाबेट पढ़ते हैं, अल्फाबेट क्या है, ए बी सी डी, राइट। अल्फाबेट में ए बी ये सबको याद है ना, क्या मुझे बता सकते हैं ये क्यों ऑलवेज हम ए के बाद बी पढ़ते हैं ना, बी के बाद सी, सी के बाद डी के बाद ई के बाद एफ ना, क्यों पढ़ते हैं ऐसा? इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते थे ना, कि ऐसे भी तो लिख सकते थे ए, ओके, ए बी सी डी, क्या ऐसे पढ़ते हैं? ऐसे भी तो लिख सकते थे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक अरेंज किया गया है ना, अरेंज ना, जैसे कि 1 के बाद
सेकंड जो लेटर है उसको देखेंगे। जैसे कि इसमें P है, इसमें N है, इसमें भी N है। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि B आएंगे, A के बाद B, अब B वाले जितने भी वर्ड्स हैं उसको आगे रखेंगे, उसके बाद C वाले, उसके बाद D, या ऐसे करके हम क्या करेंगे, N के बाद जैसे कि P और N में सबसे पहले N आते हैं, राइट? तो इसीलिए हम पहले सबसे फर्स्ट वन जितने भी A वाले वर्ड से A को पहले इसको रखेंगे, ठीक है? एंड उसके बाद N के बाद क्या आते हैं, P आते हैं ना, तो P वाले वर्ड को हम क्या करेंगे, N के बाद रखेंगे। ओके, सो इन दिस वे हमारे क्या होते हैं, जितने भी वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स है उसको ऐसे अरेंज किया गया है, ठीक है? ऐसे लाइन वाइज, ओके, एक लेटर वाइज क्या किया गया है, अरेंज किया गया है ना। सो ऐसे ही अब इसको भी क्या करना है, अरेंज करना है एबीसीडी ऑर्डर में। ओके, एबीसीडी ऑर्डर में अरेंज करना है इसको भी। सो लेट्स डू वन बाय वन। ओके, फर्स्ट पे देखिए, यहाँ पे P, पेलिकन का सबसे P आया है। ओके, उसके बाद व्हाइट का W, S, सैंड का S, ब्लैक का B, नेक का N, कोट का C, डॉग का L, फ्रेंड्स का F। तो इनमें से सबसे पहले जो वर्ड है वो कौन सा, मुझे बता सकते हैं? मुझे बता सकते हैं? जैसे कि सबसे फर्स्ट में हम लिखेंगे A वाली वर्ड्स, ओके? क्या A वाली वर्ड्स है? नो। ओके, तो देन वी विल मूव टू द B वर्ड्स, ओके? B वर्ड्स क्या B वाली है? B वाली यहाँ है B वाली, ओके? सो क्या करेंगे, BLAC, ब्लैक को सबसे फर्स्ट में लिखेंगे, देन मूव टू द नेक्स्ट। C वाला है, C वाला वर्ड, C वाला वर्ड, ओके? C वाला वर्ड को ऐसे लिखेंगे, C के बाद B, ओके? सो ऐसे ही आपका यहाँ पे ऐड कर दिया है, ओके? ऐड कर दिया है, इसको पूरा क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, अंडरस्टैंड? कंप्लीट करेंगे। ओके, सो इसको ऐसे ही करना है। जैसे मैंने टू को कर दिया, ब्लैक एंड अपना जितने भी वर्ड्स है उसको एक ऐसे लाइन वाइज क्या करना है, यहाँ पे एड तक कंप्लीट करना है, अंडरस्टैंड? कंप्लीट करना है, कंप्लीट करना है, ओके? और वन बाय वन हम इसको फिर एक बार देखिए, इसमें करेक्शन करेंगे, अंडरस्टैंड? दिस इज योर होमवर्क, पेज नंबर 6। ओके, सो ये होमवर्क करके करना है, पर इसमें फिर हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है? इसको डिस्कशन करेंगे। सो आई एम गोइंग टू एंड द क्लास नाउ, बी रेडी फॉर अनदर क्लास। ओके, थैंक यू ऑल। गुड आफ्टरनून क्लास, मैं हूँ निकिता शाह, आप लोगों की हिंदी टीचर। और आज हम लोग फिर से हिंदी क्लास करने के लिए क्या हो गए, जुड़ गए, है कि नहीं? तो सब अभी घर पे कैसे हो? सबको हैप्पी न्यू ईयर। सबसे पहले तो सबका न्यू ईयर कैसा बीता? तुम लोग को कॉपी में, बोर्ड में जो भी करवाया जा रहा है ना, सब कॉपी में लिख लेना, ठीक है?
चलो चलो सब ज्वाइन हो गए हो ना। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि लिंग किसे कहते हैं, है कि नहीं? कि लिंग क्या है? तो लिंग हम लोगों ने पढ़ा था कि जिस भी शब्द से लड़की या लड़का होने का पता चले उसे हम लोग क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। तो लिंग तो सबको समझ में आ चुका था, है कि नहीं? अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? तो आज हम लोग पढ़ेंगे नाम वाले शब्द, ठीक है? नाम वाले शब्द या फिर जिसे हम लिंग संज्ञा भी कहते हैं, ठीक है? तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि नाम वाले शब्द होते क्या है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सबका नाम होता है कि नहीं? जैसे मेरा नाम निकिता है, आप लोगों का भी कुछ नाम है कि नहीं? सबका कुछ ना कुछ नाम होता ही है। तो इसी नाम को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा, ठीक है? तो हम लोग जिस भी शब्द से, तो नाम क्या होता है? देखो, अगर तुम लोग अपने आसपास देखोगे चारों तरफ तो क्या है? सभी जगह कुछ ना कुछ चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, कि नहीं? और सारी चीज़ों का कुछ ना कुछ नाम जरूर होता है कि नहीं होता है? बताओ। जैसे हम लोग कुछ भी चीज़ सामने देखते हैं तो उसका क्या होता है? नाम होता ही है ना। अपने आसपास चलो, आंखें बंद करके सोचो या अपने आसपास तुम लोग देखोगे तो क्या दिखता है? कि जितनी भी चीज़ें हमें दिख रही है, जितनी भी चीज़ें हमें महसूस हो रही है, जैसे देखो हवा हमें दिखाई नहीं देता है, पर हम लोग उसका नाम जानते हैं कि जो अचानक हमें यहाँ पे महसूस होता है उसे क्या कहते हैं? हवा कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो नाम वाले शब्द या संज्ञा क्या है? तो जिस भी शब्द से हमें उसके नाम का पता चलता है तो हम उसे नाम वाले शब्द या क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, ठीक है? तो किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है? किसी भी नाम को क्या कहेंगे हम लोग? चाहे कोई भी नाम हो, हम लोग उसको क्या कहेंगे? हम लोग उसको संज्ञा कहेंगे, ठीक है? जैसे तुम लोग देखो, यहाँ पे ये क्या दिख रहा है? ये ब्लैक बोर्ड है कि नहीं? तो इसका नाम क्या है? इस चीज़ का नाम बोर्ड है। फिर ये जो मेरे हाथों में है इसका नाम क्या है? पेन है। ऐसे तुम लोग अभी हाथ में मोबाइल लेके देख रहे हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसमें तुम लोग ये वीडियो ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग मोबाइल कहते हैं। या फिर जहाँ हम लोग रहते हैं उससे हम लोग घर कहते हैं। तो
बहुत सारी चीज़ें, देखो तुम्हारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उसका कुछ ना कुछ क्या है, नाम जरूर है कि नहीं है। तो हमारे आसपास, हमारे अगल बगल हमें जो चीज़ महसूस होती है, कभी कभी बहुत मतलब कुछ चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती पर वो चीज़ हमें महसूस हो जाती है। तो ऐसी जो भी चीज़ें होती हैं जो हमें दिखाई दे, जिसे हम छू सकते हैं या जिसे हम महसूस कर सकते हैं, उसे ही हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहते हैं संज्ञा, ठीक है। या फिर हम लोग उसे कहते हैं नाम वाले शब्द। तो आप लोग अभी क्लास 1 में हो, तो इसीलिए आप लोगों के बुक में संज्ञा को नाम वाले शब्द लिखकर बताया गया है, ठीक है। चलो, नाम वाले शब्द किसे कहते हैं, सबको समझ में आया। तो जैसे देखो, जिस भी शब्द से नाम का पता चले, ठीक है, उसे हम नाम वाले शब्द या फिर संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग नाम वाले शब्द या फिर संज्ञा कहेंगे। सबको समझ में आया। सबको यहाँ तक समझ में आया। सबको अपनी कॉपी में ये डेफिनेशन जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो लिख लो, ठीक है। तो जिस भी शब्द से नाम का पता चलता है उसे ही हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। एकदम इजी तरीके से अगर हम बोले तो किसी भी चीज़ का नाम क्या है, संज्ञा है। जैसे देखो हम लोग, अब तुम आसपास देखो कोई भी, या फिर आंख बंद करके तुम लोग कोई चीज़ सोचो और उसका नाम, ऐसा तो नहीं होता ना कभी भी कि उसका नाम ना हो, सबका नाम होता ही है, ठीक है। जैसे तुम लोग जो हम लोग जो पुस्तक से पढ़ते हैं, जिसमें ड्राइंग बना होता है, लिखा रहता है अलग अलग चीज़ों के बारे में, अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम किताब कहते हैं, है कि नहीं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, मतलब हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, नाम वाले शब्दों को एक एक्सरसाइज के थ्रू जानेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक बॉक्स में 4 शब्द लिखूंगी, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे 4 वाक्य लिखूंगी। आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोग उस शब्द को चूज करके बताओगे कि उसे हम लोग किस सेंटेंस में फिट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे देखो 4 नाम लिखा है, दिख रहा है सबको। यहाँ पे मैंने क्या किया है, 4 नाम लिखा है, ठीक है। तो तुम लोगों को क्या करना है, अब मैं 4 सेंटेंस इसके नीचे लिखूंगी, ठीक है। अब तुम लोगों को इससे, जैसे ये नंबर 1 है, ये नंबर 2, ये नंबर 3 और ये नंबर 4, ठीक है। तो तुम लोगों को क्या करना है, मुझे बताना है कि किस वाले सेंटेंस में हम लोग कौन सा शब्द डालेंगे, ठीक है।
चलो तो देखो अभी यहाँ पे क्या है, मैंने 4 सेंटेंस लिखा है कि नहीं। तो इस 4 सेंटेंस में हम लोगों को क्या करना है कि ऊपर की जो ये चारों वर्ड है, ये जो चारों वर्ड है, पहला क्या है सूरज, दूसरा क्या है, दूसरा है तितली, तीसरा है पेड़ और चौथा है भारत, है कि नहीं। तो हम लोगों को क्या करना है कि इन चारों शब्दों को, जो नाम वाले शब्द जो किसी न किसी चीज के नाम है कि नहीं। जैसे सूरज किसका नाम है, सूरज बहुत सारे लड़कों का भी नाम होता है, या फिर क्या होता है जो आसमान में निकलता है सूरज, उसका भी नाम है ना। तितली, तितली सब लोग देखे हुए एक छोटे सा इंसेक्ट होता है जिसका नाम क्या होता है, तितली। उसके बाद पेड़, हमारे आसपास हम बहुत सारे क्या देखते हैं, पेड़ देखते हैं, है कि नहीं। उसके बाद भारत, जहाँ पे हम लोग क्या करते रहते हैं। तो चलो पहला सेंटेंस देखो, पहला सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है कि डैश उड़ रही है। तो अब देखो सूरज उड़ रही है नहीं होगा, है कि नहीं, क्योंकि सूरज कभी उड़ता है, सूरज तो उड़ता ही नहीं है। उसके बाद दूसरा है तितली उड़ रही है, तो ये क्या होगा यहाँ पे, सेकंड वाला सही होगा। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, तितली उड़ रही है, ठीक है। उसके बाद देखो आसमान में डैश चमक रहा है, तो आसमान में क्या होगा, यहाँ पे देखो पेड़ तो चमकेगा नहीं, भारत आसमान में नहीं चमकेगा, तो क्या चमकेगा, सूरज। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, आसमान में सूरज चमक रहा है कि नहीं। उसके बाद देखो डैश हरा भरा है, तो क्या हरा भरा होता है, पेड़, है कि नहीं। यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पेड़ हरा भरा है। और लास्ट हमारे देश का नाम भारत है। देखो तीनों हो गया आंसर, ये बच्चा कब क्या होगा, हमारे देश का नाम भारत है। गुड आफ्टरनून जयशंकर। ये 4 ही है, ठीक है, वो 4 ही लिखा हुआ था, ठीक है, ठीक है जयशंकर। चलो समझ में आया सबको। तो नाम वाले शब्द क्या होते हैं, हम लोग और एक बार देख लेते हैं कि नाम वाले शब्द जो होते हैं ना, वो किसी भी चीज का नाम जो होता है, किसी भी चीज का कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जो हमें दिखाई देता है, जिसको हम लोग फील कर सकते हैं, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, जिसको हम लोग फील कर सकते हैं, ठीक है, उन चीजों के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जिस किसी भी चीज का नाम, जिस भी शब्द से नाम का पता चले, हम लोग उसको संज्ञा कहते हैं, ठीक है। चलो तुम लोगों के लिए होमवर्क रहेगा,
तो तुम लोगों का होमवर्क रहेगा कि 10 नाम वाले शब्द क्या करके आना है, लिखकर आना है, ठीक है। चलो थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। और नाम वाले शब्द मैं और एक बार कल रिवीजन करवा दूंगी, पर तुम लोगों को सब अच्छे से समझ में आ गया है ना? चलो वेरी गुड। तो अब तुम लोग की अगली क्लास होगी, ठीक है। थैंक यू क्लास। Good afternoon, students. Okay, now let's begin our science class. Okay. Now हमारा चैप्टर क्या था? चैप्टर 13 staying clean and healthy। तो हम इसके बारे में जो हमारा लास्ट पोर्शन है वो करेंगे। ओके, गुड आफ्टरनून जयश। Okay, now we will start our topic. अब हमने अपने आप को कैसे साफ रखना है, अपने घरों को, स्कूल्स को, है ना, वो सब हमने जाना, राइट। अब स्टेइंग हेल्दी, हम अब हेल्दी कैसे रह सकते हैं वो हम जानेंगे। ओके, यस यस, दिस इज द लास्ट क्लास। ओके जयश, ये लास्ट है। ओके, टू बी हेल्दी मीन्स टू बी स्ट्रॉन्ग एंड फ्री ऑफ एनी इलनेस। हेल्दी का मतलब है, स्टेइंग हेल्दी का मतलब है to be strong and free of illness. Okay. You know that staying clean help us stay healthy. Here are some more things that has to be done to be healthy, है ना। हम लोग staying healthy का मतलब क्या है? To be strong, मजबूत होना अंदर से, and free of illness, हर बीमारी से बचना। Okay. Now, so what are the things that we should keep to do to keep ourselves healthy, है ना। हमें क्या क्या चीज करना चाहिए? First point is eat healthy food, है ना, such as fruits and vegetables. Too much of chips, chocolates, ice creams and fizzy drinks are bad for us. तो हमेशा we have to eat healthy foods, है ना। What should we do to stay healthy? Should we do stay healthy? First is eat healthy food. Such as fruits and vegetables. Okay, the first point is we have to eat healthy foods like fruits
वेजिटेबल्स, वी शुड नॉट हैव मच जंक फूड, ओके। चिप्स वगैरह रोज रोज लेना अच्छी बात नहीं है। इफ वी आर हैविंग हेल्दी फूड लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वी विल बी हेल्दी, ओके। ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, ओके। हम लोग ऐसे क्या होता है, हम लोग समर में तो कंटिन्यू पानी पी रहे हैं, है ना, क्योंकि अब गर्मी होता है, एक्सेस है ना, पसीना आता है, हम लोग पानी पी रहे हैं। विंटर सीजन में हम मोस्टली पानी नहीं पीते, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। विंटर सीजन हो, ओके, हैव वार्म वाटर, गर्म पानी पियो, वार्म वाटर, ठीक है। तो एवरी डे टेक वाटर, ओके। पानी हमेशा उसी तरह से ही पीना चाहिए, ओके। उससे क्या होता है, हमारे बॉडी में पानी की कमी नहीं होगा। एंड हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे, है ना। तो दूध भी पीते रहना चाहिए, बिकॉज मिल्क क्या करता है, दूध क्या करता है, हमारे टीथ और बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, दांत और हड्डियों को मजबूत करता है, ओके। सो यू शुड ऑलवेज ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर एंड हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे, ओके। देन go out and play in the fresh air, this help us stay healthy. Go out and play, okay. Morning में तो you see it's very cold, but थोड़ा सा when you see the sun coming, है ना, जाके तुम लोग खेल सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, okay. You should always have to be healthy. हेल्दी रहने के लिए तुम लोग को फिजिकल एक्सरसाइज भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। जितना हम लोग खाना खा रहे हैं, जितना हम अपने क्या कहते हैं हाइजीन का, अपने आप का ध्यान रख रहे हैं, उतना ही हमें एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी है। उससे क्या होता है, हम लोग अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से हेल्दी होंगे, ओके। यस यस, यू कैन राइट इट जयश, तुम अगर लिखना चाहते हो तो यू कैन राइट इट, ओके। एंड हमें क्या करना चाहिए, वेयर द मास्क, ओके। इफ द एयर आउटसाइड इज डर्टी, सपोज इफ यू आर गोइंग समवेयर, ओके, कहीं मार्केट्स पे जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, बाहर थोड़ा एयर इज डर्टी, थोड़ा गंदा है, तो ऑलवेज वेयर अ मास्क। उससे क्या होता है, बुखार नहीं लगता, जुकाम नहीं लगता है, ओके। यू शुड ऑल्सो वेयर अ मास्क इफ यू आर गोइंग समवेयर नियर हु हैज़ अ कफ और कोल्ड। अगर तुम किसी के पास जा रहे हो जिसको ऑलरेडी बीमार है, जुकाम लगा है, बुखार लगा है, ऑलवेज वेयर अ मास्क, मास्क लगा के जाओ, ओके। उससे क्या होगा, तुम्हें भी जर्म्स नहीं लगेंगे, तुम भी बीमार नहीं पड़ोगे, ओके। नंबर 3 इज always wear a mask if the air outside is dirty, okay. And the next one is number 4 is what do you have, get enough sleep, okay. जितना हम खेल रहे, जितना हम अपने आप का ध्यान रहे, जितना हम एक्सरसाइज करें, उतना ही सोना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, ओके। एक्सेस भी नहीं सोना है, कम भी नहीं सोना है, ठीक सोना है, ओके। अप टू 8 आवर्स, है ना, 8 घंटे तक यू शुड स्लीप। रात को सही टाइम पे सोना ज़रूरी है, ओके। दिस ऑल यू शुड नो, ओके। Get enough sleep, go to bed and wake up at the same time every day. If you are going to bed, तुम लोग रात को सोने 9 बजे 10 बजे जा रहे हो और तुम लोग सुबह 6 बजे उठ रहे हो, तो उसी रूटीन को फॉलो करते जाओ, कि सेम टाइम पे सोना, सेम टाइम पे उठना। क्या बोलते हैं हम लोग, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। अर्ली टू बेड मतलब हम लोग बेड में जल मतलब होता है हम लोग जल्दी भी उठ रहे हैं, ओके। तो इसी रूटीन को हमें फॉलो करना है, ओके। And do not spend too much time looking at the screens of TVs, mobile phones and computers.
कलर्स दे हार्म आवर आइज। डिसाइड अभी तुम लोग क्लासेस ले रहे हो, है ना, लेकिन ज़्यादा यू शुड नॉट फोकस ऑन अदर थिंग्स। जो चीज़ें तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, जो तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा है, तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहा है ना, ज़्यादा क्या कर टीवी में, मोबाइल स्क्रीन में, टैब में, वहाँ पे ज़्यादा तुम लोगों को क्या नहीं करना है, ज़्यादा फोकस होके वहाँ पे फोकस नहीं होना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारी आँखें बिगड़ने लगती है, हमारी आँखें कमज़ोर होने लगते हैं, हमें चश्मा पहनना पड़ जाता है। ओके, तो हमें ज़्यादातर मोबाइल की स्क्रीन में बिल्कुल भी नहीं देखना है। ओके, अपने आप को हेल्दी रहना है तो हम खुद से, हमें खुद करना होगा। ओके, हमारा बॉडी है, हमारा जिम्मा है, हम उसको अच्छे से क्या करना है, हेल्दी रखना है। ओके, अंडरस्टूड? सो दीज आर द सम पॉइंट्स, है ना। देन डू नॉट स्पेंड always have milk also. Okay, and wear mask if the air outside is dirty, then get enough sleep. Okay, do not spend too much time on TV screens. Okay, so this all you want to understand. ये सब तुम लोगों को जानना जरूरी है। Okay, now why we need to stay healthy? Stay healthy to play, to study and grow well. Okay, so that's why we all need to stay healthy. Okay, so आप लोग ये पॉइंट्स को अच्छे से रिवाइज करना। ओके, व्हाई शुड वी डू टू स्टे हेल्दी एंड व्हाई डू वी नीड टू स्टे हेल्दी? ओके, these are some points you can revise it. Okay, understood? So next class में we'll do other exercises related to this chapter. Now I'm going to end our class here. I will meet you tomorrow. Okay, students, do this properly. आप लोग notes भी ले सकते हैं या फिर इसको अच्छे से you can refer it from book also. Book से भी आप लोग पढ़ सकते हैं. Okay, I'll meet you tomorrow.